This is a skill, or this is a part of our life that we all keep doing 24/7, every time, every second of our life. But before actually starting my point of view, before actually giving you what I believe reading to be, I would like to take your feedback, what you say about it. So just please, if anybody of you could write in the chat box, what do you mean by reading? Or what is reading for you? All right. So would anybody like to answer, what do you mean by reading? Or I should add up the other question, the next question. Do you like reading? Okay, one friend has shared reading to know the thoughts of others. Okay, reading text. Reading can be fun, can be painful, depends on motivation, fine. Articles, reading is a source of being informed. Okay, fine, good. So before I start, I would like to know how much my friends in this session read. So do you like to read? And if yes, what do you like to read? Reading is for soul. I can read anything. Okay, that's good. International reading. Okay, even billboards. Okay, that is very good. Interesting. Newspaper, that I would also like to come back to this point, even billboards. Fiction, current affairs, novels, right. Okay, so that is a good trigger of aspects that we have got from you people. Siratul Nabi, intentional, poetry, novels. Okay, good, good. Now, if you would like to share with me, how much do you read every day? Do you have you fixed some time in your daily routine which you give only for reading? Reading of your choice? Okay, no fixed time. Okay, hardly 30 minutes, 15 to 30 minutes on average. Okay, that is a good time. Okay, so I'm getting multiple answers from you. It is again on the type of reading you do and the type. All right, no time in running schedule. That is a very pertinent question that we will be raising further in this session. Next, okay, as आजकल स्लाइड पढ़ते हैं. Okay, that is a very important thing because you can't pass your exam without reading those slides. How do you encourage your students to read other books besides the textbooks? We as teacher keep on forcing our students to come after reading the textbook of your own subject. So have you ever encouraged your student to read something else other than those course books? Okay, social media long post. Okay, yes, that was a good answer, which I would need in the later. They want games, Facebooks, sleep time se pehle in night. Okay, yes, this should would this was the practice of our elders, our previous generation especially. And I would be happy if anybody of you keeps following that routine of reading something before going to bed. But they do not. They want video, but the students have access to social media. Okay, that is a very pertinent point. So I'm just skipping here. So just 5 ways of encouraging students. We would come back to it towards the end of our this session where we will discuss as educators, what is our role um, in developing reading in our students. So before coming to the point that how can we encourage the students, first of all, we should read why reading is important. Is it important enough that we as teachers should give time for the development of this habit in our students? You see, man is differentiated with animals on the basis of language, the major point that of difference. Otherwise, we have the same organs, same system, same limbs kind of thing, but language is a thing that differentiates us from animals. And why? How do we use language? We use language each and every second of our life. We use language to speak, we use language to write. That is the output skills that I have just marked here.
And then there are two input skills when we are talking about language skills. So there are two input skills, listening and reading, reading being one that we are discussing here. So it means if language is used by these four skills, and reading makes 1/4 of these skills, the important part of our life. We use language to read billboards, as one of my friends said here. To we read our bills, we read our books, we read on our phones, we read on the road signs, anything and everywhere. Even we think in language. You must have not experienced any time in your life that where you have tried to think without using language. So language is that much important, and being 1/4 part of reading, intentionally or unintentionally, you see that although we think that listening and speaking are the skills that we are using more, but unconsciously, unintentionally, we are reading all the time as well. We are reading symbols, we are reading signs, we are reading words, we are reading other people's as well. So when we come to reading books, that is our point today. So some of you have just given me your idea of what is reading. These are a few definitions which will clarify what is reading considered in language, for linguists, for the people who teach and read language. Reading is a cognitive process that involves decoding symbols to arrive at meaning. And in the very first definition, there are a few key points that are very essential for us to understand before we go further. Cognitive process. We think that we use language consciously. But as I said, that we are all the time reading, so it cannot be conscious effort 24 hours. Cognitive process is something which is based on your conscious efforts, unconscious efforts, impulsive behaviors, habits, everything. So cognitive process, which involves whole of your psychology, the people belonging to psychology, the subject of psychology in this group, they would be understanding it better. But for all of us, we know that it is a mental process. And what is that mental process? We decode symbols. How do we do it? When we are reading something, whether it is on your screen as you are reading the slides right now with me, or anywhere else when you are doing that activity, actually you find some symbols written on a paper, on a board, anywhere, and we decode those symbols. Why? Because when a writer has written those symbols, those words on the screen, on the page, he or she has actually coded some message into it. And reading is the other way around. We decode that message when we read those symbols. And why do we read it? Why do we decode that symbol? Because we want to arrive at meaning, which is the basic purpose of using language, that is communication, interaction. So it is not only the verbal interaction and communication that we are habitual of, but reading and writing is an equally interactive practice where a writer has coded something into symbols, and you are decoding those meaning through those symbols as a reader. So this is one definition. The process of looking at a series of written symbols and getting meaning from them. So do we read in isolation? Not possible. We decode meaning, or we are able to decode meaning when we are looking at a series of written symbols to understand in in what context those symbols have been created by the writer to decode that meaning. For example, if you are looking at a road sign and you see that Lahore Zoo 1 kilometer ahead on the right side, or on 1 meter ahead, you are moving on motorway, you are moving on GT road, and you keep on getting signs to tell you of the further places which are on the road, and you will be reading in how much time. So why you will be reading those symbols? Because you want to calculate when will you reach the other milestone in your journey. So those symbols are actually coded in that way that they will they will provide you your intended information, which you need, your needed information. So if you keep looking at the series of written symbols, then you will keep on getting the meaning, and you will by large, you will at the end, you will achieve the complete meaning. Similarly, if you are reading a story, a poem, a drama,
a novel, you will keep on reading, and you will be just looking at those series of written symbols one after another to actually get the gist of that novel, the drama, the poem, anything that you are reading, even a news article, even a single sentence. Then reading is an interaction between the text and the reader. You see, as I said earlier, that usually we confuse this uh, this interaction between the speaker and the listener, because that is more obvious. You can see it with your eyes, you can feel it, you can be a part of it intentionally. But being a reader and being a writer, it seems to be a very passive thing, that you are not coming in contact with the other side. But it is not so. By looking at that, what is written on the page, you can understand what the writer has given to you, and that is only not only the words. Reading involves reading words, letters, जो मिलकर words बना रहे हैं, the sentences which are made by words, punctuation marks, the arrangement of lines, the arrangement of paragraphs, everything. And what do they do? They actually create that interaction between the text and the reader. What the writer has intended for the reader to get, and what you as a reader are trying to get, the actual viewpoint of the writer. All right. Do you think that if you are looking at those slides, do you think that reading is important? After reading those definitions, still do you believe reading is important? We should discuss it in a session of 1.5 hours. All right. Yes. Okay, so I hope you agree with these points, which are only a few. These are not all. Why reading is important, I have just jotted down a few of those points which tell us about the importance of the reading. But there are, again, many of the points which you would be having in your mind, which you would be having in your mind as a teacher, as a social person, as a human being, as a family member, why you feel reading is important. First of all, in the first definition, we saw that it is a cognitive process. So cognitive process makes your mind active, it develops your mind, it broadens it, it gives you better understanding of the world, it gives you more exposure to the things which you have not experienced personally. um, okay, reading consoles you in your nostalgic phase. Yes, 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 very much. Because if you come across a book which reminds you or which takes you back to your memories, which refers to something that you have experienced earlier in your life, so yes, that nostalgia is satisfied. You feel at home by reading that book. And we do get this nostalgic phase very much when we are reading the English novels, for example, written by Pakistani diaspora, जो बाहर रह रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान की सेटिंग में नॉवल सेट करते हैं, तो वो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, फील होता है, पढ़ने के लिए इजी होता है, बजाय इसके कि जो इटली में लेट से सेट हुआ हुआ है या जो जापान में सेट हुआ हुआ है. So that yes, that is very important, that is good. Then it gives you excessive knowledge and lessons of life. Okay, as I said, I have just said that reading gives you exposure to those things which you have not experienced yourself. For example, if you are reading a novel about Norway and you have never seen those auroras, जिनको कहते हैं polar lights कहते हैं, अगर आपने नहीं देखी, but if you read a novel which is describing those auroras, then you are having that knowledge which you didn't have earlier. Then if you are reading a novel by a Chinese writer and he's through that novel, you learn how their homes are made, houses are made, how their cuisine is made, what is their cuisine made of, how do they interact with one another. So this is excessive knowledge which is not actually, or which would not have been possible to be obtained in your present kind of situation where you are living. Lessons of life, yes. छोटी क्लासेस में भी आपको याद होगा, आपके जब वो थर्स्टी क्रो और ग्रीडी डॉग वाली कहानियां होती थी, तो उसमें एक चीज जरूर दी जाती थी बच्चों को, टू टेल देम दैट एवरी नरेशन हैज अ मॉरल टू लर्न, लेसन टू लर्न. एंड मॉरल यूज्ड टू बी ग्रेट स्कर्स. आपको जब नीड हो तो फिर आप उसके मुताबिक अपनी चीजें करते हैं. नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड ऑल दैट. तो ये क्या है? दीज आर ऑल लेसन्स ऑफ लाइफ. व्हाई डू वी रीड? बिकॉज एट टाइम्स वी आर इंटेंशनली or unintentionally, we are learning those lessons from the characters which another person in another
place where he is living, he has created for you, and he has shared his experience, his view of life, and sometimes, somehow, unknowingly or knowingly, you apply those lessons of life which you have learned through books to your own life. When you are in a fix, when you do not know what to do, at times you are reminded of any other character who has done something similar, who was caught in something in a similar situation, and he had um, managed to come out of that difficulty by using something very peculiar, very precise. So yes, that lesson is going to help you in your own life. It helps understand the world better. So don't confuse that I'm talking about the countries abroad. I'm talking about even this room where you must be sitting in your house, your neighborhood, your city, your province, your country, anything. It is that what you are reading about that is going to enhance your understanding of your surroundings, of how people react, how people live, their psychology, their culture. Like if you read a story where some Pathan characters are introduced in that one, so whenever you will cross a Pathan person, maybe you would be reminded of that, and you will be able to understand the reaction, the impressions, the interaction of that person better. Now I'm having some very good books which are being shared by my colleagues, and these are all very good ones. I would like all of you to read these books as well. Okay, it keeps the mind active. You see, with the passage of time, as we are moving in this modern age, the patients of dementia and Alzheimer's, the number of those patients is increasing day by day. Why? Because your mind is dulled so much in a way that you are unable to remember anything. You are unable to perform those daily routine, which was part of your life for many years. Reading can be a preventive measure against those diseases, because by making your mind active, by making you think about what you have read, but by making you analyze about the story that you have read, the information that you have read. And mind it that when I keep on saying the story, the characters, I'm not only talking about literature. Whatever thing you are reading, even if it is a non-fiction book, even if it is a big book of Sira, if it is a book on Hazrat Khadija Radhiyallahu anhu, if it is Pire Kamil, if it is Dashte Soos, as our friends have shared, any fiction, non-fiction, practical, professional, even a very dry book of your subject, but if it is a dry subject, even that will keep your mind active. You will keep on analyzing, thinking, and rethinking about it. Consciously, perhaps no. Unconsciously, yes, because that information that has entered into your mind, that will be constantly analyzed and stored and processed in your mind, even when you are not consciously doing it. It enhances creative ability. You see, we are very self-centered as human beings. We think that whatever I am thinking, for example, that is the only answer to the situation which I am facing. Sometimes, or many a times, it happens that if you discuss it with your friend, maybe he will give you an out-of-the-box solution for the same problem, and you will think that, oh, why didn't I think of it? So that creativity, that thing that you did not consider about it, that aspect, that solution, again, you will learn multiple lessons of that creative ability through books. As we just discussed the point, lessons of life, the reading of different material, the viewpoint of different writers, it gives you many out of the box solutions. It makes you creative. You learn how you can perform your daily chores, for example, how you can interact with other people, how you can dress up, for example. Maybe you would like somebody whose dress is being mentioned in a book, and you would like to dress up in the same way, and that might be the creative thing that you have learned. Improves your vocabulary. Okay, that is a very important point that we as teachers must know, especially the teachers of language. You see, I just discussed that language is a two-way process, input and output. Input is that when you are receiving language in your personality, in your mind, that is through listening or reading. And productivity or output skills are writing and speaking.
At times you are at a loss that you cannot find the most appropriate word that will express what you are feeling. कोई ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड आ रहा है जहन में लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा, वो क्लिक नहीं हो रहा, वो पॉइंट आपके जहन में. Believe me, those people who read a lot in the target language, I'm not only talking about English, चाहे आप उर्दू सीखना चाहते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, फारसी सीखना चाहते हैं, फ्रेंच सीखना चाहते हैं, जब तक आप उसका इनटेक नहीं बढ़ाएंगे तब तक उसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी. जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, आप यकीन करें कि आपकी वोकेबलरी कब शार्प हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा. आपके टेंसेस कब ठीक हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. आपका एक्सप्रेशन किस तरह पॉलिश हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, एंड विदाउट यू कॉन्शियसली मेकिंग एन एफर्ट यू विल बी प्रोड्यूसिंग हाई क्लास लैंग्वेज, द टारगेट लैंग्वेज व्हाटएवर इट इज. तो जब बच्चे खासतौर पे बीइंग लैंग्वेज टीचर एज आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, मेनी टाइम्स बच्चे जब पास आउट हो जाते हैं और उसके भी कोई 4-6 महीने के बाद जब वो किसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, रोल नंबर मिल गया है, टेस्ट की डेट आ गई है, तो फिर वो बात करते हैं कि मिस बताएं तैयारी कहाँ से करें. और मेरा जवाब ये होता है तैयारी का टाइम तो गुजर गया. क्योंकि जब आप 4 साल बीएस कर रहे हैं तो उस वक्त भी मैं अपनी क्लास को जरूर कहती हूँ कि जितनी ज्यादा हो सकती है आप रीडिंग करें, आप लिसनिंग करें. ये आपको शार्प करेगी, आपकी लैंग्वेज का इनपुट देगी. और अगर वो 4 साल बच्चे उस तरह लर्न कर लें तो आप यकीन करो उन्हें टेस्ट की तैयारी की जरूरत नहीं रहती. स्पेशली जो सिंपल एक लैंग्वेज टेस्ट हो उसकी तैयारी की जरूरत नहीं रहती. जो लोग भी रीडिंग करते हैं एंड दोज हु डू नॉट, यू विल फाइंड अ वेरी स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू. The language they would be using would be enormously different, and you will, without even asking them, you would learn that this is the one who takes a lot of input, and this is the one who just goes by and produces language whenever he is forced to do it, otherwise not. Communication skills, remember this is the interaction we have just discussed. It can be speaking, it can be spoken or oral communication skills, or it can be written communication skills. If you read a lot, it will affect both of your written and oral communication. You would become a better writer, you would become a better speaker. Reading, listening में आपको पता है अगर हम अपने बच्चों से कहते हैं कि आप ज्यादा कोई मूवी देख लें, so because of having that cultural difference, many a times our students are not allowed to watch English movies. I hope you understand. Reading is a thing where we can just narrow down that thing to minimum, where they can read, where their parents would not be able to object at something. And again, mind it, as I keep on saying it, I'm not talking about reading only the novels. They can read news articles, they can listen to documentaries. जितना भी इनपुट होगा उतनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होती जाएंगी, और रीडिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. सो रीडिंग को अगर हम थोड़ा समराइज करें, जो अभी हमने 3-4 स्लाइड्स में डिस्कस किया है, reading is a multifaceted process involving word recognition, comprehension, fluency, and motivation. A good reader must have achieved all those 4 points, meaning he's able to recognize words, he's able to understand what those words denote or what is coded in those words, and he is also able to read fluently. As a person, you must have felt this thing yourself as well, that perhaps when you are not able to do something in a fast manner, you just get bored by it and you think that it is very tiring. So fluency bhi agar hogi, so it will keep you motivated to read again, to read another book, to read further. Agar ek hi book mein itna time lag jayega to phir aap kehte hain chhode, this is not for me, I can't read, I shouldn't read, it takes much of my time and I get much lesser learning than the time as compared to the time you are giving. So you say that just leave it. एक चीज का यहाँ पर मैं जरूर इसको हाईलाइट कर दूं, ये एक सिंपल सी एक एग्जांपल है that you can do it in a fast way, but reading दो तरह से differentiate होती है. One is accurate reading and one is fluent reading. Accuracy and fluency. When you are reading for an exam, for example, then you can't be fast enough to just be leaving things behind. कि जल्दी जल्दी खत्म तो हो जाए लेकिन वो चीजें काफी सारी छूट जाएं.
वहां पर हमें एक्यूरेसी चाहिए, यानी एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो आपको चाहिए अपने टेस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के लिए, तो फिर आपको एक्यूरेसी चाहिए होगी, फ्लुएंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रीडिंग फॉर लायर, अगर मुझे इन स्लाइड्स का पेपर देना है, देन आई वुड बी एन एक्यूरेट रीडर ऑफ दीज स्लाइड्स। अगर मुझे सिर्फ उनको देख के करना है कि हाँ ठीक है, जो समझ आ गई समझ आ गई, नहीं आई तो ना आई, तो मे बी आई वुड बी अ फ्लुएंट रीडर. So it all depends on the on the need that you are using. Language is always used according to the need that you are using it for. अगर आपकी नीड जैसी होगी वैसी ही आपका मेथड होगा, आपकी स्ट्रेटेजीज होंगी, जो अभी हम अगली स्लाइड में बिल्कुल जाने लगे हैं. One friend has shared that reading builds up and raises level of confidence. That is also very good. It develops your personality. Yes, cognitive process है ना, तो आपके माइंड को जब ये शार्पन करेगा तो ये आपको भी रिफाइन करेगा. You will also become a better version of your own self. And you will be confident because you will know that you can speak, you can write. You will not be embarrassed before others. Okay, reading, is it that simple कि आपने words recognize किए, उनको understand किया, fluently किया या accurately किया, whether you are motivated or not? Is it a simple process? So that is again a no. It is a very complex process. But identifying, recognizing written signs, comprehending the signs, and constructing meaning of the signs, this is a very, very technical definition of reading, जहाँ पर हर चीज आपको terminology में मिल रही है. So this is but luckily we are not to do this complex process consciously. Otherwise शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाता. So we are lucky as human beings that we are made in such a way that all that cognitive process is done unconsciously, impulsively, as a habit, as something that we are tuned for. So all this technical process is done in that way. When you are reading funny books, as one of my colleague has shared, that also gives you all the things. At times, people will say that there's no use reading funny books. They are just garbage, or I'm sorry to use that word, or they are not worth it. They are not worth it that you should give them a try. But you see, again, you can get all those things from even comic books, even comics, even न्यूज आर्टिकल्स और कॉलम्स. अगर आपको पॉलिटिक्स में अगर दिलचस्पी है, सो और आपको फिक्शन बुक्स नहीं अच्छी लगती, सो व्हाट यू कैन टेक अप फॉर रीडिंग इज न्यूज आर्टिकल्स. और आपको पता है, जस्ट a bit recent, reading newspaper in the morning was a very, very healthy activity that was done in almost all the homes of educated people. If people learned that this person doesn't read newspaper in the morning, they were just in a shock. And now the people who will daily give time to read the newspaper, whether in Urdu or English, you will find them very rare. So that very, very positive activity of reading, it is also has it has also gone out from our routine. So updated people, yes, those who read newspapers, they are really, really updated. And you can talk to them on any subject at all. And ये इसको भी हम दोबारा भी इस point पर आएंगे जब हम general knowledge की बात करेंगे. Strategies for reading comprehension. अब ये ध्यान में रखिए कि हमारा आज का टॉपिक है developing reading habits in students. तो ये जो strategies जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनकी ये हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, and we can also give these strategies to our students as well, because you can increase your comprehension of a reading text. Mustansar Hussain Tarad and Mushtaq Ahmad Yusfi, yes, very welcome folks whenever these names come to your mind, because they will just take you away. जो अभी हम आगे थोड़ा आगे जाके benefits of reading में पढ़ेंगे, वहां पर यही है कि इस किस्म की बुक्स थोड़ी देर के लिए आपको आपके माइंड से निकाल देती हैं, स्ट्रेस रिलीवर होती हैं. Okay, so first of thing that you can do to improve your reading comprehension is that making inferences. You see, we keep on doing it all our life without knowing the exact term for it. For example, आपने शायद making inferences कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आपने ये जरूर किया होगा कि अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हैं तो हम पहले से कहना शुरू कर देते हैं, हाँ मुझे पता है अब आगे जाके ये होगा, ये जो कैरेक्टर जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं ना, आगे देखना ऐसा धोखा देना है, ये इस बंदे के साथ बड़ी बुरी होने वाली है. So what are we doing? We are making inferences. Inferences कैसे कर रहे हैं?
whatever we have watched up till that moment, जहां पर हमने अपना inference दिया है कि आगे ये होगा, we have actually comprehended it somehow, और उसकी बेस पर हम अब आगे के लिए predict कर रहे हैं, जो एक और point आपको इसी slide पे नजर आ रहा होगा. Inference का मतलब है कि आपने उससे कुछ ना कुछ meaning infer किया है, कोई मायने निकाला है उसमें से, and you are on that basis you are able to predict what will happen further. और इसको हम लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी में foreshadowing भी कहते हैं, यानी आपको पहले से राइटर तैयार कर देता है कि आगे क्या होने वाला है. क्वेश्चनिंग, यू सी, बाज दफा आप लोग अपनी किताब खुद खरीदते हैं जो आपने ना कभी किसी से सुनी, ना कभी किसी को इसके बारे में पढ़ा, बट एट टाइम्स आपको उस बुक से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं which raise questions in your minds, and you want to answer those questions by reading that book. Maybe on a public, what I should say, on a news channel, if you are watching a show that prime time shows, and they refer to a book that such and such thing has been written in that book about one of our politicians and one of our the phase of our country, and the questions are raised in your mind. What will you do? Either just rely on what has been said in that news show, or go and find that book and read it. So those questions, they are very important. You can also raise questions in the mind of your students when you will refer to a book and you will give them incomplete information, or you give them something critical to find in that book. Meaning you will create a need for them to read that book. So that is how you can encourage them to read, and this is how, by reading those some reviews or anything, you can raise questions as well in your mind, and you can read, you can comprehend better. For example, I'll give you the example of a novel which has been written on something on a political phase, the case of exploding mangoes. If you will read that novel without knowing its background, maybe you will lose many things, because in that novel facts and fictions are just merged in a very beautiful way. But if you have read those parts of history in newspapers through your elders, or if you have just learnt about them somehow, then that novel will become more understandable for you. Okay, visualizing, that is another technique, and that is a very, very happy technique. I should say again, something which can release your stress, which can take you away from your worries for a while, that you keep on visualizing what you read. If you are reading about a family that lives in a beautiful house by the seashore, so what will you do? You will visualize that house. You will visualize the rooms used by those characters in that house. If you are reading a travelogue, somebody just mentioned Hussain Tarar. So if you are reading Ketu Kahani, and if he's moving to Concordia, so if you haven't seen any pictures of Concordia or that route to Ketu, so what will you do? You will visualize it. You will just try to imagine what kind of land they would be moving on, what kind of boulders, what kind of those glaciers which he's talking about, which are very, very, very terrible, very horrifying. So you keep on visualizing, and that is a very good technique, because when you visualize, you become one with the writer or the character. In the travelogue scene, you will become one with the writer, and maybe empathizing with him or her, and actually understanding what he feels. And if you are visualizing the novels, then you will be empathizing with the characters and you will become one with them. आप कुदरतुल्लाह शहाब का सफर की लाइफ हिस्ट्री पढ़ लें, so you will empathize with कुदरतुल्लाह शहाब. अगर आप पढ़ रहे हैं शेक्सपियर की हिस्ट्री, शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो you will empathize with Shakespeare if you visualize. Looking for the main idea. So that is the actual thing, the need why you are reading. We keep on looking that moral, the lesson, the main idea, the major thing, the purpose of reading that text. अगर आपको नहीं है, अगर आपको main idea नहीं मिला, or if you have missed the lesson, so it is as if you have not read anything. फिर तो उसका फायदा ही कोई नहीं हुआ, फिर तो आप पढ़ें या ना पढ़ें बराबर हो गया. So when you are a good reader, you are actually looking for that main idea, the lesson that you are looking for in that particular text. Critical thinking,
This is something very, very important, and I hope that you give this message to your students as well, that critical thinking is that whatever you are reading, do you accept whatever writer is telling? What is your view on that? I would like to hear from you in the chat box. I would like to read from you from in the chat box. क्या आपको जो कुछ राइटर लिख रहा है आप उसको 100% एज इट इज ले लेते हैं? रीडिंग हेल्प्स इन एंजाइटी मैनेजमेंट, ओके यस, स्ट्रेस रिलीव करती है क्योंकि कुछ देर के लिए आपको एस्केप करवा देती है आपके सराउंडिंग से. ओके, वी आई हैव गॉट सो मेनी नोज एंड आई एम हैप्पी. You see, writer has given his very subjective personal viewpoint in whatever he has produced. We as a reader, we have our own experiences, our own background knowledge, our own viewpoint. So on the scale of 1 to 100, you can agree or disagree with the writer on whatever. If you share, let's say 40% background knowledge with the writer, then you will take only 40%. If 60% is different, you will challenge it. You will say, no, 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 it is not the same. It is not the case. I can't just take each and every word that he has written for its meaning. You will challenge it. You will rethink about it. You will analyze it. Yes, biasness of the by the reader must be considered. Biasness by the writer must also be considered, because by many times you come across a text which you know that the writer has written in a very, very biased manner. So would you actually believe what he has written? No. You will critically think about it. You will critically analyze about it. And yes, that it plays vital role in our thinking approach. The type of better version of yourself, how will you become it when you can add to it? I'm very grateful for my friends who are actually supporting me with their points, with their comments in the chat box, because yes, contributing your share is everything. Yes, but I'm really thankful. So critical thinking is a very important part of reading. We are not just passively lying while we are reading something and just accepting everything that somebody has just given to us in a plate. You will just pick up anything. You will just pick up only those things which you require, and you will just leave out anything which you do not need. Application of knowledge. So is reading just such a passive thing that we read, we decode the meaning and all that, and then we just leave it, the lessons we have learned? No. Your reading will be complete when you apply those lessons to your own life. It can be immediately, it can be maybe 20 years after, but that application of knowledge, that is a must. If you teach a child that if you are greedy and you will start barking at the reflection of the other dog, you will lose something that is in your own mouth as well. So that child will never, ever forget that something, that greed is a very bad thing. If you teach somebody the way Crow has acted to solve his problem, the child is never going to just unlearn it. He or she will all the time keep on applying that knowledge on the type of situations that they will come in their life. Okay. Next, 6 essential sub skills. These are at times considered to be the sub skills of our language skills, all of these, and at times only especially the reading and listening. Identifying words and punctuation. Okay, we have very much talked about identifying words, and we are all familiar with how you recognize letters, make words of it, and create meaning. What about punctuation? When you are speaking and the person you are interacting with, your listener, is just standing opposite, he can take help in understanding what you want to convey by many non-verbal cues, your facial expressions, your eye contact, the tone of your voice, the way you look at him or you look away from him, the body language and all that. But the writer is not there when you are reading to convey all these non-verbal clues to you. So what will he do? Will he just keep on writing the same way from the first line to the last line?
in the same manner without changing anything. So what will be the impact? How will he give that impression to his expression which non-verbal clues give? So writer has a very, very important tool in his mind, that is punctuation. By following and comprehending the punctuation, believe me that you will understand a text better. How? If a sentence finishes at a full stop and there is another sentence that finishes at the ends with an exclamation mark, are they good? Are they same? No, because if there is a full stop, it means the argument for as far as the sentence is considered, it has been finished. But exclamation mark will show that this sentence has shown some very strong emotion that has been expressed. Pauses, elliptic marks होते हैं ना, जहाँ कुछ छोड़ दिया जाता है तो 3 डॉट्स डाल दिए जाते हैं, that tells you कि यहाँ कुछ था. And many a times in drama, in written drama, you find this kind of punctuation because a writer has to speak it out. So writer तो वहाँ हर ड्रामा, जैसे ड्रामा लाहौर में रहने वाले ड्रामेटिस्ट ने लिखा है, वो स्टेज पे प्रोड्यूस हो रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो क्या वो लाहौर से न्यूयॉर्क जाएगा? फिर अगले हफ्ते वो प्रोड्यूस हो रहा है पेरिस में, तो क्या वो पेरिस जाएगा? नो. उसे वहीं पर कुछ ऐसे लिंक्स देने हैं, कुछ ऐसे क्लूज देने हैं, कुछ ऐसे साइंस देने हैं कि जो एक्टर्स हैं उनको वो उन लाइंस को उसी तरह एक्सप्रेस करें जिस तरह वो चाहता है. तो वहां पे वो elliptic रिमार्क्स दे देगा, ब्रैकेट में छोटी छोटी चीजें लिख देता है, लाउडली, इन अ विस्पर, मूविंग अहेड वगैरह वगैरह. सो राइटर हर तरह के टेक्स्ट में, चाहे वो ड्रामा है, नॉवल है, नॉन फिक्शन राइटिंग है, न्यूज आर्टिकल्स हैं, इन सब में आपको ये punctuation marks मिलते हैं which improve your understanding of a text. Predicting the meaning of new words. I just talked about 2 types of reader. One is accurate reader and one is fluent reader. Accurate reader की एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह दूंगी कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं, लेट्स से इवन अगर आप एक कॉमिक पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको एक नया वर्ड मिल गया. अब कॉमिक पढ़ते हुए या तो आप डिक्शनरी साथ रख लें, आपको जो कोई नया वर्ड मिला आपने फटाफट डिक्शनरी खोली, उसको फॉलो करते हुए उसके प्रोटोकॉल को, यू जस्ट रीच दैट वर्ड एंड देन यू रीड दैट वर्ड, उसकी सारी डेफिनेशन, नाउन है, वर्ब है, वगैरह वगैरह जो भी है, एंड देन यू ओ यस दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. ओके फाइन. आपको 10 पेजेस के कॉमिक में आपको 40 वर्ड्स ढूंढने पड़ गए हैं. सो वुड यू लाइक टू रीड अनदर कॉमिक? जो पहले अभी मैंने बात की थी कि वो इतना बोरिंग, इतना डल हो जाता है, आपको तो छोड़ो, ये तो ज्यादा मुश्किल है काम, कौन पढ़े इतनी अंग्रेजी और कौन इतने वर्ड्स ढूंढे. एंड द फ्लुएंट रीडर वो क्या करेगा, क्योंकि वो तो लेयर के लिए पढ़ रहा है ना, उसने कॉमिक का एग्जाम तो नहीं देना. He will try to predict the meaning of those new words which he has never read earlier, which he has never heard earlier. He will just try to predict the meaning of that word from the context. वो जो सीन जिसमें वो राइटर, वो कैरेक्टर वो वर्ड यूज कर रहा है, वो उससे कुछ अज्यूम करेगा कि अच्छा इसका मीनिंग कुछ करीब करीब ये होना चाहिए. अगर उसको सेटिस्फाई हो जाता है, ही जस्ट मूव फॉरवर्ड. वो 40 वर्ड्स के 40 वर्ड्स इसी तरह प्रिडिक्ट करके उनका मीनिंग वो खत्म कर लेगा. जो पहले वाले शख्स ने शायद घंटे में पढ़ा हो, वो उसको 15 मिनट में पढ़ के उसको फारिग हो जाएगा. एंड ही विल बी मोटिवेटेड टू रीड मोर बिकॉज दैट वाज फन. सो प्रिडिक्टिंग मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटेजी. जहां तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर इट. लेकिन हाँ, अगर आपका एग्जाम ही मीनिंग का होना है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपको करना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा. लेकिन आमतौर पे नीड बेस्ड आपकी अप्रोच के साथ साथ अगर आपको जरूरत नहीं पड़ती तो फिर आप उसको प्रिडिक्ट करते जाइए. Inferring and using background knowledge, this is where you come as a reader. Are you passive? Don't you bring anything to that book? Okay, so you see, जब आप अपना background knowledge लाते हैं, that changes the understanding of the same text in the multiple ways, the way you differ in your background knowledge. आप एक ही text देने के लिए जाते हैं, अपनी एक टेक्स्ट देते हैं अपनी क्लास को पढ़ने के लिए, चाहे वो आपका बायोलॉजी का लेसन है, चाहे वो आपकी इंग्लिश की किताब है, ज्योग्राफी का लेसन है, कोई भी लेसन है. तो आप उसको जब पढ़ने जाते हैं और उसके बाद आप बच्चों से पूछते हैं, आप उनको 10 मिनट देते हैं कि ये पैराग्राफ पढ़ें जरा, and then you start a discussion and you ask them to give their understanding about that paragraph.
believe me, they will give as many different understandings as many people are sitting in that room, because the background knowledge that they apply on that text and what they infer from that text would be very, very different. So it is where the reader can make difference in the meaning of that written text. Sentence construction and cohesion. You see, whenever we are writing, आपने बचपन से ये एक्टिविटी हम बचपन में शुरू करवा देते हैं बच्चों को as teachers. There are 10 lines तो लिखे ना myself पे. Write 15 lines on my school, and the child will automatically start in a given way. This is my school. The name of my school is this. It has this much classes. It has this many rooms. It has a big ground and all that. So और उसके बाद में आखिर में एक जुमला जरूर होता था, आई लाइक माई स्कूल वेरी मच. तो क्या ये ऐसे ही है? क्या सब बच्चों के जहन में ऑटोमेटिकली कोई बिल्ट इन स्ट्रक्चर है? नो, बिकॉज दे आर टॉट दैट वे कि आपने इस तरह करना है. सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस कोहेजन आपको बहुत कुछ देता है व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग. सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू वन और टू एग्जांपल्स, इफ टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड बाय एंड, when you read and you know that something additional is coming, but if the two sentences are combined by but, you know that something opposite is coming. So that structure also prepares you for what you can predict, what you will be, and predicting makes your understanding way better than when you are not predicting at all, when you are just passively taking it. The two last sub skills which are very, very important and which are actually the two methods of reading as well, skimming and scanning. Skimmed milk, I hope all of you have read about it. Skimmed milk जिसकी मलाई उतारी हुई होती है. Skimmed क्या हुआ फिर? वो skim वो जो मलाई आ गई. We keep on using this word, cream of society, cream of the student. हाई मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं वो तो क्रीम ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो तो फलां कॉलेज ले जाते हैं या वगैरह वगैरह. So skimming का मतलब है to be getting the essence of something, the gist of something. जो आपको बाकी सारा कुछ आप छोड़ भी दें तो आपके पास जो चीज चाहिए थी वो आ गई. So skimming would be that you are reading a text और उसके बाद आप उसका एक overview ले लेते हैं जल्दी जल्दी उसको ऊपर नजर डाल के. आप एक एक वर्ड नहीं पढ़ रहे, ये याद रखिएगा. स्किमिंग में एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं. और कहाँ आपको ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, चलें एक और एग्जांपल लेते हैं. that you are doing a research, आपको बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ने हैं. सो वुड यू बी हैविंग टाइम कि आप हर आर्टिकल को उसके एब्स्ट्रैक्ट से लेके उसके कंक्लूजन तक एक एक वर्ड पढ़ें? यू कैन डू इट बिकॉज मेनी ऑफ द राइटर्स वोंट बी इवन रेलेवेंट टू योर पॉइंट. तो फिर क्या करें? then you skim, you go for skimming. आप उसका abstract पढ़ते हैं, introduction की कुछ lines पढ़ते हैं, then you move on to a bit of, you just have a look on the literature review, then the methodology, और फिर थोड़ा सा उसका discussion पर नजर डाली, conclusion पे आ गए, you have got the idea of that article, and then you have got the gist, you have got the essence that whether you need that article or not. तो जो जंक रीडिंग है आप उससे बच जाते हैं. वरना जो न्यू रिसर्चर्स हैं वास्तव अगर उनको कोई गाइड ना करे तो वो हर आर्टिकल को शुरू से एंड तक पढ़ रहे होते हैं और वो उस चीज में ही निढाल हो जाते हैं कि जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं वो बाद दफा मिस हो जाते हैं. यस, नटशेल, जस्ट, एसेंस, आइडिया, ये सारे वही वर्ड्स हैं जो हम स्किमिंग के लिए कर सकते हैं. वन लाइनर बाद दफा हम यूज करते हैं किसी नॉवल के स्किम्ड पार्ट के लिए. स्कैनिंग कहाँ यूज होती है? यू सी, स्कैनिंग होती है जब आप बिल के देखते हैं ना, बिजली का बिल आया है और उसमें अमाउंट कितनी है जितनी पे करनी है, तो आपने पूरा बिल नहीं पढ़ना. यू विल नॉट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द लाहौर और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वगैरह वगैरह. यू विल जस्ट गो फॉर दैट वर्ड, जहां पर उस जगह पे जाएंगे जहां पर आपकी बिल की अमाउंट लिखी हुई है. उसके बाद दूसरी चीज क्या चाहिए होगी? ड्यू डेट कौन सी है. सो यू विल अगेन गो टू दैट प्लेस जहां पर ड्यू डेट होती है. फिर हमें इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है. वी हैव स्कैन्ड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट थिंग. जो आपको चाहिए आपने सिर्फ वही चीज उठाई, बाकी सारे टेक्स्ट से आपको कोई काम नहीं है. बेशक उसको आप छोड़ दें, ना पढ़ें, दैट डजंट मैटर. स्कैनिंग में आपको याद होगा स्कैन करते हैं हम. एक बहुत कॉमन गेम है जो हर तरह के मैगजीन्स में, खासतौर पर बच्चों के मैगजीन्स में होती है, जहाँ कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और ऊपर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना होता है जिसमें मुख्तलिफ लेटर्स रेंडमली लगे होते हैं और आपको एक्टिविटी ये करनी है कि जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं आपको उसमें से उनको ढूंढना है, लोकेट करना है. सो वुड यू बी रीडिंग ईच एंड एवरी लेटर? नो.
आपकी आईज मूव करती हैं उसके ऊपर रैपिडली एंड यू स्कैन फॉर दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स जो वो वर्ड बना दे जो नीचे लिखा हुआ है. सो दैट इज ऑल्सो स्कैनिंग. आपको अगर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आपको पूरी नहीं पढ़ेंगे आप उसको सिर्फ स्कैन करके छोड़ देंगे. जब आपने एक लोकेट करनी है, एक फाइंड आउट करनी है कोई ना कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और स्किमिंग क्या होगी, जस्ट ऑफ द होल थिंग. उसमें भी आपने पूरी नहीं पढ़नी लेकिन आपको पूरा आइडिया जरूर हो जाए. अच्छा, ये जरूर याद रखिएगा दैट मेनी अ टाइम स्किमिंग में जब आप उसको दोबारा अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो मे बी यू विल फाइंड समथिंग वेरी डिफरेंट. लेकिन आप मेरी मतलब की बात चाहें तो अगेन आई सेड अर्लियर कि अगर आपको पेपर पास करना है तो एक्यूरेट रीडिंग करें, अगर अगर फन करना है तो रीडिंग करें और आगे निकल जाएं. ओके, सो दैट वाज स्कैनिंग एंड वी डिस्कस स्कैनिंग. ऑलराइट, ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स में डेवलप कर सकते हैं रीडिंग. ओके, प्रिपेयर फॉर रीडिंग. क्योंकि हम एक टीचर के तौर पर क्लास को अपने स्टूडेंट्स में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं, तो ये ध्यान में रखें दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट ओनली लिटरेचर एंड लैंग्वेज टीचर्स. आई एम नॉट ओनली एड्रेसिंग दोस, मैं सबको एड्रेस कर रही हूँ. प्रिपेयर कैसे करेंगे रीडिंग के लिए जो लिटरेचर के लोग नहीं है? सो यू सी, इवन इफ यू टीच बायो, इफ यू टीच साइकोलॉजी, इफ यू रीड एनी अदर सब्जेक्ट, आपने एक टेस्ट लेना है बच्चों का, सो यू विल आस्क देम कि कल पढ़कर आना. ये जो नीचे आ रहा है ना, सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर रीडिंग, इसको और इसको मैं मर्ज कर रही हूँ कि आपने गोल सेट कर दिया, कल पढ़कर आना, चैप्टर 1 का टेस्ट होगा. नाउ दे हैव टू प्रिपेयर, they have been given a goal, और आपने उनको एक तरह की चीज बता दी. अब आप कैसे बताएंगे कि वो क्या क्या रीडिंग करें, कौन सा मेथड इस्तेमाल करें? अगर आप कहते हैं कि आपका क्विज होगा, उनकी रीडिंग मेथड और हो जाएगा, उसकी वो अलग से प्रिपरेशन करेंगे. अगर आप कहते हैं कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको डायग्राम बनानी आएगी, अगर आपको कोई ग्राफ बनाना आएगा, कोई बार्स बनानी होंगी, so you are actually setting a goal and you are preparing them what they should read and how they should read. So that preparation is very much important. और अगर हम layer reading की तरफ बच्चों को ला रहे हैं, बुक रीडिंग की तरफ, तो उसमें ये ध्यान में रखिए कि आप आज दफा किसी बुक का हवाला दे देते हैं क्लास में. आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आपकी बात करते करते जब वी आर एट टाइम्स डाइग्रेस्ड, और या अपने माइंड अपने पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए हम बाज दफा आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा जिनको ये 13 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए चाहिए, मैं जरूर आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कुछ बुक्स. ओके, सो आई वाज टॉकिंग कि अगर हम कोई, फॉर एग्जांपल अगर हम उनको बुक रीडिंग की तरफ ला रहे हैं, सो हाउ कैन वी आस्क देम टू रीड. आप कोई बुक का हवाला दे देते हैं पढ़ते हुए, फलां बात मैंने फलां बुक में पढ़ी थी. फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की हम मुस्तनसर संतारड़ की, तो आप बताते हैं कि हाँ वो फलां बुक में ना ये लिखते हैं, बच्चे जरूर फॉलो करेंगे आपको एंड दे वुड लाइक टू रीड. आपने उसको उनको प्रिपेयर कर दिया फॉर द काइंड ऑफ बुक यू वांट देम टू रीड. अगर आप चाहते हैं कि वो कोई इंग्लिश नॉवेल पढ़ें, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप उसके बारे में बात करेंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि ये बुक इस बारे में है. ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे कि अच्छा बच्चों मेरा ख्याल है मैंने फला बुक पढ़ी थी जब अपने बचपन में, तो मुझे बड़ा मजा आया था, आप भी पढ़ लें. दिस इज नॉट गोइंग टू एनकरेज द स्टूडेंट्स until and unless you raise the curiosity in those students, in those why should they read it. That need creation is very much important. Fun lover के लिए fun create करना, कोई interesting चीज पढ़ना, that is very much a need जो आपको जरूर create करनी चाहिए. Okay, develop a habit of daily reading. I mentioned earlier as well कि जब पहले हमारे यहाँ अक्सर औकात ये होता था कि एवरीबडी यूज टू बोस्ट कि मेरे तो साइड टेबल पे कोई ना कोई किताब पढ़ी होती है. मैं जरूर रात को सोने से पहले कोई किताब के 2-4 सफ़े 10 सफ़े एक चैप्टर जरूर पढ़ता हूँ. मेरे मामू थे, वो जरूर जब तक वो जासूसी डाइजेस्ट की कोई कहानी नहीं पढ़ लेते थे वो रात को सोते नहीं थे, या सस्पेंस की. सो एनीथिंग, एनी मटेरियल यू वांट टू रीड, बट दैट रीडिंग यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर नाइट एक्टिविटीज. जी, इमरान सीरीज भी, जो भी आपको पसंद आती है, इवन अगर आप टार्जन की कहानियां भी पढ़ना चाहते हैं ना, तो इवन दैट इज अ गुड ऑप्शन. आप रीड कर रहे हैं कुछ ना कुछ एंड यू आर जस्ट रिलैक्सिंग. अब हर कोई वॉर एंड पीस नहीं पढ़ेगा टॉल्स्टॉय की, वो उससे ही हमें इंटिमिडेट हो जाता है कि इतना मोटा नॉवेल है तो कौन पढ़े. अगर आप छोटी सी कोई बुक पढ़े, इवन ओल्ड मैन एंड द सी,
वो भी कोई रात को पढ़ना चाहते हो, दैट इज गुड पार्ट, या इस तरह की कोई और। शुआ किरण भी, यस, एनीथिंग, because we are not talking about only the English language, we are reading, we are talking about reading, जो उर्दू की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, फारसी की भी हो सकती है, anything. Okay, read a few reviews about the text beforehand. अभी पहले भी मैंने कहा था कि कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि कोई बुक अचानक से पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसे ही कोई बुक पढ़ी और आपने उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप लेट्स से आपके स्टाफ में भी बैठे हुए हैं और आपके साथ कोई खातून आपकी कोलीग है, आपका कोलीग है, वो कोई बुक पढ़ रहे हैं और वो 2 मिनट के लिए टेबल पे रख कर जाते हैं, तो हमें एज टीचर्स, एज आई शुड से रिफाइंड पीपल, हमें ये जरूर होता है बुक कैसी है, जरा उठा के देखते हैं। आप जरूर उठाते हैं, उसके बैक पे जो रिव्यूज होते हैं वो देखते हैं, उसको जरा सा पलट के देखते हैं कि कैसी अंदर से क्या चीजें हैं, कुछ लाइंस आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, अच्छी लग रही हैं। Similarly, if you go to buy a book at a bookstore, again, you would not just pick up the first book that is lying in that book shelf. आप जरूर कुछ ना कुछ बुक्स के रिव्यूज जरूर पढ़ेंगे। उसके बैक पे बाज़ दफ़ा कुछ जैसे कुछ अच्छी इंग्लिश बुक्स हैं तो उनके बैक पे अगर वो किसी न्यूज़ आर्टिकल में मेंशन हुई हैं तो वहाँ पर उसका पॉइंट आ जाता है। कहीं पे अगर कोई रिव्यू उसके बारे में है, कोई प्राइज उस बुक ने विन किया है, क्या आप प्रेफेस पढ़ लेते हैं शुरू में, अगर किसी अच्छे क्रेडिबल राइटर ने उसको सजेस्ट किया हुआ है, उसको एंडोर्स किया हुआ है, सो यू विल गो फॉर दैट एज वेल। तो ये रिव्यूज पढ़ना भी आपके लिए आसान हो जाता है। आप बता सकते हैं, बच्चों को रिव्यूज बता सकते हैं कि फला बुक जो है उसका रिव्यू बड़ा अच्छा है, मैंने फला अखबार के आर्टिकल में पढ़ा था कि जो नई बुक आई है ना अभी मार्केट में फला राइटर की, उसमें ये चीजें हैं, इस तरह की हैं। सो यू आर एक्चुअली अगेन प्रिपेयरिंग देम फॉर रीडिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस, ये हमने थोड़ा कर लिया है तो मैं आगे जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट हो गए हैं टाइम में। यूज डिफरेंट रीडिंग स्ट्रेटेजीज, अगेन व्हाई यू आर रीडिंग, इट डिटरमिन्स हाउ यू विल रीड। ये सारी चीजें उस तरह। अच्छा, मुझे लगता है चैट बॉक्स में एक छोटा सा हमारे अपनी लाइब्रेरी खुल गई है यहाँ पे, सो आई एम हैप्पी दैट यू ऑल हैव बीन रीडिंग इवन इफ यू डू नॉट फाइंड टाइम टू रीड नाउ। So try to just create that habit, because now I'm going to give you the example of Bill Gates, considered to be one of the most successful men um, in our contemporary life. Do you think these busy people, they are not reading? Then you are at fault. They read a lot. In an interview, Bill Gates has given 4 points how he reads and how he thinks that people should read. Make notes on the margin, कि हम सब करते हैं, and I hope all of you also do it, कि जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं अपनी जाती, not library की या दोस्त की नहीं, so you keep on writing notes on the margin. So what happens that when you are again looking back at that book, somehow those notes will again revise everything that you have learned about it. या उसको वैसे ही कम से कम हम कभी flip करें तो हमें उस notes से समझ आती है कि इसमें क्या था। Yes, I do as well. मैं भी अपनी बुक परचेज करके पढ़ना पसंद करती हूँ, बिकॉज मुझे भी ये बड़ी आदत है अंडरलाइन करने की और लिखने की। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने बुक शुरू की, आपने ऐसे ही किसी के कहने पे उठा तो ली कि ये बुक अच्छी है, उसके बाद आपसे खत्म नहीं हो रही, बिकॉज इट इज बोरिंग फॉर यू, it doesn't maybe match it doesn't matches your aptitude, it doesn't matches your viewpoint, so you just put it down. Or maybe you have started a thick book, जैसे मैंने वॉर एंड पीस का आपको हवाला दिया, वो इतनी मोटी किताब है, आप किसी से ताना सुन के अभी तक तुमने वॉर एंड पीस नहीं पढ़ी है, आप उठा तो लेते हैं, फिर आपसे वो खत्म नहीं हो रही, then you will be, instead of getting fun, getting learning from reading, you will be guilty of not completing that book. और जब तक वो complete नहीं होगी आप कहेंगे नहीं ये complete नहीं ना होती, तब तक मैं कुछ और भी नहीं पढ़ूं। So this is a very good lesson that Bill Gates has given, that you must finish you must finish what you start. Sorry, I was reading that comment. Paper books or e-books, Bill Gates इस पे भी बात करता है। For some people, paper books are the type that they want to read, और कुछ ऐसे हैं जो कहते नहीं पेपर बुक तो बड़ा स्यापा है, खर्चा है। ई बुक्स मिल जाती हैं, मुफ्त में मिल जाती हैं, घर बैठे पढ़ लेते हैं, जब मर्जी पढ़ लेते हैं। So again, it depends on your aptitude. Bill Gates भी यही कहते हैं। He says that whether you want to read paper book or you want to read an e-book, it all depends on what you want to write and what you want to read.
एंड यू शुडंट बी ashamed ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. अगर आप पेपर बुक पढ़ रहे हैं तो आप ये ना कोई शर्मिंदगी में ना हो कि कोई कहे कि इसको गैजेट चलाना नहीं ना आता इसलिए ई बुक पढ़ नहीं सकते, या अगर कोई ई बुक पढ़ रहे हैं तो आप ये कि हाँ देखा खरीद नहीं ना सकते. देयर इज nothing to be ashamed of. It is only your choice that matters. Block out an hour. That is something very important that he has advised, that you must reserve a book, sorry, you must reserve some time in your daily routine for reading. Any type of reading can which you have read. यहाँ एक कमेंट आया था, has a book ever changed your life? Yes it did. लेकिन अब हम अपने टॉपिक से बहुत ज्यादा डाइग्रेस हो जाएंगे. कभी दोबारा मौका मिला तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे. बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, मैं कुछ लोग को जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट. हम डिस्कस करते रहें ताकि हम लास्ट तक जल्दी पहुंचे एंड वी हैव सम टाइम फॉर डिस्कशन एज वेल. हालांकि मेरी कोशिश है कि मैं साथ साथ आप लोगों को आपके सवालों का जवाब देती जाऊं, ताकि अगर टाइम कम भी हुआ तो एटलीस्ट वी आर इंटरेक्टिंग इन दैट वे. रीडिंग हेल्प्स गेट रिड ऑफ एडिक्टिव गेम्स एंड एडिक्टिव स्क्रीन स्क्रॉलिंग. अभी जब मैंने आपसे पूछा था कि डू यू encourage your students to read, you see, this is actually that I hope that we achieve by promoting reading habits in our students. That screen that has become, or that has occupied most of our time in life. Our students, nurses, Facebook scrolling, YouTube scrolling, games खेल रहे हैं धड़ाधड़, और वो सारा टाइम करके आपको मिला क्या एंड में? कुछ भी नहीं. आप जब फेसबुक पे 1 घंटा गुजार के उठते हैं तो वहां पर आपको ये तो पता चल जाएगा कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कौन अच्छी वो 5 मिनट्स क्राफ्ट वगैरह में या उस तरह की चीजें आ गई, लेकिन आपके जो लाइफ लेसन्स हैं वो नहीं है, कुछ सॉलिड नहीं है, वो चीज नहीं है जिसको आप कोट कर सके. आप फेसबुक को कोट नहीं कर सकते, आप इंस्टाग्राम को कोट नहीं कर सकते, गेम्स को कोट नहीं कर सकते. आपने बेशक 100 लेवल्स आपने जीत लिए हैं, बट व्हाट हैव यू लर्न? व्हाट इज योर अचीवमेंट? नथिंग. So book reading actually should help you get rid of these addictive games and screen scrolling. Exercises से brain, ये दोबारा वही बात है, डिमेंशिया, अल्जाइमर, आपके एक्टिविटी रहती है फॉर्म ऑफ फ्री एंटरटेनमेंट. आप तुर्की नहीं जा सकते, लेकिन आपने जन्नत के पत्ते पढ़ा हुआ है तो आपको तकसीम स्क्वायर का भी पता है, आपको हिलाल स्ट्रीट का भी पता है, और आपको ये पता है कि तुर्की कैसे जूते उतार के घरों में जाते हैं. सो फ्री एंटरटेनमेंट. आपने बैठे बैठे अदलार घूम लिया, वो जजीरा घूम लिया, आप इटली पे कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, आपने बैठे बैठे वो सारी जगह एक्सप्लोर कर ली, विजुअलाइज कर ली, क्योंकि आपने विजुअलाइज कर ली तो समझने देख ली, एंड यू हैव एंटरटेन्ड योर सोल, यू एंटरटेन्ड योरसेल्फ. इंप्रूव्स कंसंट्रेशन एंड एबिलिटी टू फोकस. अगर आपका फोकस नहीं है तो रीडिंग का सारा पर्पस जीरो हो गया. आई नो यू एज पेरेंट्स, मे बी अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको ये ज्यादा प्रॉब्लम आती हो कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई नॉवेल है, कोई ट्रेवल बुक है, कोई नॉन फिक्शन बुक है, कोई चीज है, इवन आप लेक्चर तैयार कर रहे हैं और आपका छोटा बच्चा बार बार आपको आवाजें दे देता है, आपके हस्बैंड आपको या आपकी वाइफ बार बार आवाज दे देती है, आपकी कंसंट्रेशन टूट जाती है, आप बुक बंद करके रखते हैं कि अच्छा जी पहले आप बात कर लें फिर मैं पढ़ लूंगा. Because without that concentration and ability to focus, you can't read. And when you are reading a lot, then it improves your concentration and ability to focus. General knowledge. You see, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हवाला दूंगा आपको, हवाला दूंगी सॉरी, एक अपनी बेटी का. मेरी बेटी है छोटी, she reads a lot, बहुत नॉवेल्स पढ़ती है, और उससे आप दुनिया जहान की किसी चीज पे भी बात कर लें, उसकी जनरल नॉलेज ऐसी है जो माशाल्लाह एट टाइम्स मुझे हैरान कर देती है कि अच्छा आपको ये भी पता है, अच्छा आपको ये भी चीजें पता है. क्या उसने कोई तैयारी की है जनरल नॉलेज की बुक्स पकड़ के कि हाँ 100 मिनट 100 सवाल वगैरह टाइप कोई किताब तो नहीं. बाय रीडिंग ऑल दोज बुक्स शी हैज अ treasure, a vast treasure of general knowledge. So this is she has just passed her class 10 and she has read almost mashallah 90 novels in this year. Reading improves memory because when you are just putting it that information, तो आपका माइंड भी एक्टिवेट होता है. जैसे कहते हैं ना खाना ज्यादा खाएं तो भूख ज्यादा लगती है, तो जब आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने माइंड को तो फिर आपका माइंड भी ज्यादा एक्टिवेट होगा, आपकी मेमोरी शार्पन होगी, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा शार्पन होंगी. मोटिवेशनल, आपने एक बुक पढ़ी, आपने उसके बाद एक और पढ़ी, एंड यू आर जस्ट
काउंटिंग पे भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटी का वाला दिया, मैंने तो शायद कभी काउंट नहीं की कि मैंने कितनी बुक्स पढ़ी, कमी होती है वैसे, लेकिन कभी नहीं काउंट की। लेकिन आपका कुछ ना कुछ आपकी मोटिवेशनल रहती है। आपको बात दफा किसी से डिस्कशन पे चले जाते हैं एंड यू आर हैप्पी दैट यू हैव रेड दैट बुक, सो दैट इज मोटिवेशनल। स्ट्रेस रिड्यूस करती है एम्पैथी। एम्पैथी होता है कि आप किसी और कैरेक्टर या किसी और बंदे की जगह उसके यू कैन पुट योर फीट इन द शूज ऑफ दैट पर्सन। जो एक उर्दू का मुहावरा है ना कि आप किसी की जगह खड़े होके, आप उसकी जगह खड़े होकर कर लेते हैं, दैट इज एम्पैथी। रीडिंग में आप उन लोगों के साथ उनकी फीलिंग्स शेयर करते हैं जो आपने जिंदगी में खुद कभी फील नहीं की, तो ये आपको उनके साथ एम्पैथी या उस तरह के लोगों के साथ एम्पैथी करवाने पे आपकी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पहले भी कल के लेक्चर में हवाला दिया था कि आप कश्मीर के हवाले से अगर पढ़ते हैं कि कश्मीर में भारतीय फौज ने 10 कश्मीरियों को शहीद कर दिया, आपके लिए एक न्यूज है। आपने 10 कश्मीरियों का पढ़ा, आपने कहा अच्छा आज 10 मरे हैं, कल 12 मरे थे, चलो 2 कम है। लेकिन अगर आपने किसी भी एक कश्मीरी की शहादत पर कोई नॉवल पढ़ा हुआ है, उसका पेन, उसकी फैमिली की फीलिंग्स अगर आपने फील की हुई हैं, आपको उन 10 शहीदों और 10 शहीदों की फैमिली के साथ एम्पैथी आपकी इम्प्रूव्ड होगी। सो दिस इज व्हाट बुक्स डू फॉर अस। इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी, बुक्स पढ़नी है तो सबसे पहले लाइब्रेरी। अगर आप खुद खरीद के पढ़ते हैं फाइन, लेकिन क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है दैट यू डोंट हैव दैट मच मनी परहैप्स, या हमारे स्टूडेंट्स जिनके पास फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रेन होता है, तो उनके लाइब्रेरीज आर द बेस्ट प्लेसेस टू बी। कॉलेज लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज in your city, e-libraries, anywhere where you can find। अगर आप बिल्कुल नीचे वाले पर आ जाएंगे, बाकी दोनों तीनों हम छोड़ देते हैं, लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। It provides you material for lifelong learning and countless other resources that would otherwise be difficult to find or afford. आपको बाज़ दफ़ा मिल नहीं पाती हैं वो किताबें, या वो ई बुक्स या वो जर्नल्स जो ऑनलाइन हैं, आपकी एक्सेस नहीं है, आप किसी अच्छी लाइब्रेरी में चले जाते हैं तो आपको फिर वो मिल भी जाएंगे। और बाज़ दफ़ा वो इतने महंगे होते हैं उनकी सब्सक्रिप्शन या वो किताबें कि आप नहीं खरीद सकते, या हमारे स्टूडेंट्स नहीं खरीद सकते, so they can get those things in the library as well। ये तकरीबन वही चीजें यहाँ पर हो रही हैं, इंफॉर्मेशन एंड एक्विजिशन एंड वंस माइंड एंड ऑल दैट। क्योंकि मैं एक लास्ट स्लाइड में आपके साथ जरूर करना चाहूंगी। We have only almost 11 minutes left. Our role as educator in developing reading habits among students. किताब दोस्ती वैनिश नहीं हुई है। मेरे ये आखिरी पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, which I want टू डिस्कस विद यू। आपके पास ये स्लाइड्स पहुंच जाएंगी और आप ये 2 स्लाइड्स जो मैंने जरा तेजी से निकाली हैं, आप उनको भी पढ़ लेंगे। ये बेसिकली उन्हीं चीजों को सप्लीमेंट कर रही थी। टू एनकरेज एंड एंगेज स्टूडेंट्स टू बिकम गुड रीडर्स, अगर हम खुद पढ़ते हैं और हम बच्चों को बताते हैं कि हमने आजकल मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, या मैं रात को इतनी देर पढ़ती हूँ किताब, या मैंने इस साल में, इस महीने में ये किताब अभी रिसेंटली पढ़ी है, आप यकीन करें बच्चे टीचर की बात को पर ईमान रखते हैं कि जो टीचर कह रहा है दैट इज द लास्ट पॉइंट। आपके अपने बच्चे भी आपने देखा होगा ये करते हैं। तो अगर आप एज अ रोल मॉडल यू शो योरसेल्फ दैट यू आर अ गुड रीडर, यू स्पेंड सो मच टाइम ऑन बुक्स, व्हाई वोंट योर स्टूडेंट्स डू दैट? वो जरूर करेंगे और दे विल बी वेरी वेरी encouraged टू फॉलो योर फुटस्टेप्स। To provide assistance in selecting appropriate reading material, ये बहुत दफा we face problem in suggesting English novels or English movies to our students because of that cultural barrier or the kind of thing. I hope you understand. So how can we just, should we only ask students to go and watch English movies, go and read English novels? What we can do is we should watch some movies by ourselves. We should read some good books by ourselves and then recommend them to our students, so that they are not having that cultural shock when they are reading something different. So that is one thing we can do. To provide access to diverse literature, okay, हमने बता तो दिया फला मूवी देख ले, हमें पता ही नहीं कहाँ से देखेंगे वो। हमने बता तो दिया कि एक बुक पढ़ लें, एंड वी डोंट नो वेदर मार्केट में है भी कि नहीं है, किसी लाइब्रेरी में है भी कि नहीं है। तो एटलीस्ट वी शुड ऑल्सो एटलीस्ट नो कि क्या वो हमारी कॉलेज में है लाइब्रेरी में। अगर नहीं है तो किसी ऑनलाइन साइट पे मौजूद है, या कहीं किसी, जैसे अभी अब पिछले लेक्चर में काशिफ फराज साहब आपको बता रहे थे रीडिंग्स का, बुक स्टोर का या लिबर्टी बुक्स का, तो क्या हमें खुद पता है कि ये बुक फलां बुक स्टोर पर मौजूद है? तो आपके शहर में जो भी बुक स्टोर अच्छे हैं, क्या कभी खुद हम जाते हैं वहां, हम देखते हैं कि बुक्स मौजूद हैं कि नहीं है? इन्हीं से तो हमने इनको अच्छा देखिए, आपने भी बात की है हमारे एक फ्रेंड ने कि इंग्लिश सीजन्स देखते हैं। आप यकीन करें
आप हैरी पॉटर की सारी 6 फिल्में 8 फिल्में जितनी भी उसकी हैं वो देख लेना, आपको नॉवल उसका पढ़ने का मजा लेता ही है। आप चाहे सारे सीजन्स देख लें, लेकिन अगर वो नॉवेल्स पे बने हुए हैं तो उनको पढ़ने का मजा लेता ही है। रीडिंग कभी भी आप वॉचिंग मूवीज जो हैं वो कभी भी वो जो रीडिंग है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। टू शेयर अबाउट योर रीडिंग लाइफ, ये अभी मैंने पहले बताया कि आपकी अगर कोई रीडिंग लाइफ है तो आपके बच्चे ज्यादा उसको फॉलो करेंगे। अगर आप खुद ही नहीं पढ़ते और आप कहते हैं दफा करो, कौन खरीदे, छोड़ो, क्यों खरीदनी है, इतनी महंगी है, हम फला चीज कर लेते हैं इन पैसों से, तो फिर आपके बच्चे कभी भी नहीं करेंगे। आपको अपनी रीडिंग लाइफ बढ़ानी है, बतानी है, एंड यू हैव टू पुल योर स्टूडेंट्स बैक टू बुक रीडिंग। टू पार्टिसिपेट इन रीडिंग इनिशिएटिव्स, ओके, जस्ट इमेजिन आपने एक एक्टिविटी दी है बच्चों को कि कल फला आपको ये बुक पढ़नी है, आफ्टर 1 week we will have discussion in the class and you divide them into groups or pairs, whatever you have planned in your lesson planning, और उसके मुताबिक आप उनको बिठा देते हैं। अब वो बात कर रहे हैं and you are just sitting in a corner and you are holding your phone। वो बच्चे जो आपके लिए पढ़कर आए, आपको बताएं कि हमने क्या पढ़ा है, they will be so demoralized कि वो दोबारा इस एक्टिविटी को उस तरह नहीं करेंगे। तो व्हाट शुड यू डू एज अ टीचर, जब आपने एक एक्टिविटी की है तो आप क्लास में रोटेट करें, आप मूव करें, कभी एक ग्रुप के पास रुक जाएं, कभी दूसरे के पास रुक जाएं, कभी किसी एक बच्चे की बात सुने, कभी दूसरे की करें, तो वहां से आपको पता चलेगा कि बच्चे कितना पढ़ के आए हैं। और सबसे ज्यादा ये द स्टूडेंट्स हु हैव रेड टू इम्प्रेस यू, so they will feel that actually you have given time to them, you have just spared some time to listen to what they have felt. So it should be part of, you should be part of the reading initiatives to emphasize all kinds of reading, especially critical reading which involves reading between and beyond the lines. कल के लेक्चर में काफी ज्यादा हमारी डिस्कशन हुई थी इस बात पे कि क्या ये रीडिंग का लेक्चर सिर्फ लिटरेचर वालों के लिए है या नहीं। तो मैं आपको अपनी एक हैबिट बताती हूँ कि मैं एज लैंग्वेज टीचर या लिटरेचर टीचर, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि रीडिंग लिटरेचर इज काइंड ऑफ डूइंग डायसेक्शन ऑफ सम फ्रॉग एज वेल। आपके सामने टेक्स्ट पड़ा होता है एंड यू हैव टू डायसेक्ट इट ओपन। आप इसको जितना ओपन कर सकते हैं, आपको उसके अंदर की और उतनी ही गहरी बातें, पैरेलल लेवल्स ऑफ मीनिंग और ये सारा कुछ जो है ये आपको समझ आता है। या फिर उसको मैं दूसरी एक चीज जो मैं एनालॉजी देती हूँ, दैट रीडिंग लिटरेचर इज लाइक अ डिटेक्टिव गेम। आपको क्लूज आप ढूंढते जाते हैं जो राइटर ने आपके लिए छोड़े हैं, जितने क्लूज आप उसके पकड़ लेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो हमें एज टीचर स्टूडेंट्स को ये बताना है दैट you should not only focus on what is written, you should also focus on what not has been written, what has not been written by the writer, but you should try to find out that as well. So I would welcome some question now. This is all from my side. I hope you have learned something, and I hope and I have learned many things from you people as well. So if there are some questions, so please Ali, if you can allow the mics of the participants who have raised hands. And I'm happy अगर जिन्होंने reading की हुई है and they can empathize with me how I feel about book reading. So I'm very much thankful. Thank you for all these good comments. You have been यस a मैम, very मैंने wonderful. माइक अलाउ कर दी है, जो आपसे क्वेश्चन जी करना चाहें वो कर ले अपना माइक अनम्यूट करके। जी Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। First of all, I would like to appreciate that you have delivered a very good lecture. I Thank believe you that so much. it's very difficult talking on subjects which seem very simple on the Thank you so surface level. So it is very challenging. So you have done a good job. And then I Thank you. would like to add something here that Sure. we need to shift our approach. We will have to Yes. accept e-reading. We like it or not, e-books are there and they are going to stay. Yes. Yes. And paper books are going away, sadly, whether we like, we like the aroma, the feeling of it, but they are going to go. The world is moving towards being paperless. All that, Yes. paying respect to trees, etc.
So the thing is that, many of our participants, they were talking in the group that we have. They were talking about it that we are taking prints out of slides because we cannot read from screen. We have Yes. eyesight issues and things like that. But we Okay. need to be aware of certain steps that screens can also be managed, and there are certain settings which would enable your screen to be as friendly as paper is. So for laptops, you can Mhm. simply go to your battery and then you click it, and then you'll go to the display setting. You can reduce brightness, you can turn on Yes. blue light filter, and it would be as comfortable as a page is. So Yes. these things should also be somehow understood, and likewise there would be gadgets for reading. I came across one. It is named Kindle. It is not available in Pakistan right now. Uh, from Amazon we can get it. So this is particularly designed for reading PDFs and reading ebooks, so Mhm. that we won't Yes. have to adjust the font. उसको बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो उसमें हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. तो थोड़ा सा अभी You're मैंने really sure. जो हाँ, मैंने अपना कोई स्लाइड्स के प्रिंट आउट्स नहीं लिया. I've just adjusted the settings and all Hmm. my notes are here in the laptop. So, we need to shift our attitude towards it. So that's just, I wanted to comment and I Yes. wanted to tell No, all my that was a fellows. very good comment. Yes, thank you so much. You see, ebooks are in the market. We have so many gadgets. We can adjust them to our need. And one thing more that didn't add there, that it depends on our need as well. If we are doing research, then doing research on ebooks is far much easier than doing it on the paper book. You can Yes, just yes. write a book and that will be highlighted in the whole text wherever And it is written. So revising yes, ebooks manuscripts is don't so be. easy. If you are Yes, doing it digitally, it is very easy rather than doing it yes, on hard yes. copy. Yes. And if you're reading for layer, then writing those margin notes on the margin, that is another thing. But it all depends. Yes, both are equally, I would say, important. Both have equal weightage. Yes, Ji. writing notes on margins are difficult, but if you convert your PDFs to somehow Word docs, then there are options in the Word document that you can somehow edit changes and add in comments there also. So the problem is we are Ji. not, that much tech advanced right now. We are not Yes, yes, familiar with you're right. technology. This is the You're issue. right. So And I maybe hope that our by the coming passage of generation, time, they would not have this. Yes. I'm hopeful that all of us will be that much technically advanced, and we would be, of course, we'll have to move to ebooks as well. Okay, thank you very much, dear. Any other person? अस्सलाम मैम. Walaikum assalam. मैम दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी. एक तो ये कि बाय नेशन वाइज भी बहुत फर्क पड़ता है. जैसे जापानीज हैं या अदर नेशंस हैं, वो बसेस में भी बुक्स रीड कर रहे होते हैं. हमारे यहाँ पे एक तो ये कल्चर नहीं है. ठीक है. बिल्कुल. और दूसरा ये कि मैंने अक्सर इंग्लिश मूवीज में नोट किया कि वो बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं अपने बच्चों को लाजमी. ये उनका पार्ट ऑफ लाइफ है. मैं बड़ा हैरान होती थी इस चीज पे कि यार ये बच्चों को क्यों बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं. लेकिन अब आपका लेक्चर सुन के आइडिया हुआ है कि वो शुरू से इनकलकेट कर रहे होते हैं अपने बच्चों के अंदर कि रीडिंग करनी है. फीलिंग करवा रहे हैं. Exactly. आपने अक्सर देखा होगा बेड टाइम स्टोरी सुनाते हुए बच्चे को किताब पकड़ाई भी होती है. एग्जैक्टली. They want him or her to feel that book. और अब हमारे यहाँ पे होता है कि बच्चे साथ लेटे हुए होते हैं, हमको सुला रहे होते हैं और हम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं साथ साथ. उन्हें कह रहे होते हैं सो जाओ सो जाओ. मैं यही कहना चाह रही थी. आपकी जो दोनों बातें हैं उनका जवाब यही है कि इन दोनों बातों को हमने ही चेंज करना है. Why don't we read books in our public transport if we are traveling? Because Exactly. हम लोग इसी उसमें मारे जाते हैं. कोई देखेगा तो क्या कहेगा. तो हमें ही तो इस चीज को खत्म करना है. हमारी तो फैमिली में लेबल लग जाता है कि तो ज्यादा ही आप पढ़ाकू बनने की कोशिश मत करें. just ignore. चीजें ऐसी होती हैं which you can't manage. So why Yes, take of them course. to the heart? Just ignore. जी If you think बिल्कुल that सही. something you अब are नेगेटिव है ना, वो लोगों ने खुद भी नहीं, मैं एक्सक्यूज मी अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ना, उन्होंने किसी और को भी नहीं पढ़ने देना. इसीलिए तो हम इतना आप हमारा अच्छा काम सक्सेस है. करते हैं. जी हमारी मदर भी, मैं डॉक्टर जाहिदा बात कर रही हूँ. मेरी मदर हेड मिस्ट्रेस हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे. तो वो हमें ना स्लीपिंग टाइम में पहले तो कोई भी कससुल कुरान में से कोई सा भी किस्सा सुनाती थी. फिर उसके बाद उन्होंने वो पढ़ना शुरू कर देना.
सूरह मुल्क पढ़नी है। बच्चे जो थे लर्निंग पोजीशन में, उन्हें आयतल कुर्सी सुननी, उनकी 1 बाय 1, छोटे बहन भाइयों से सुननी, बड़ों ने उसकी मिस्टेक निकालनी। इस तरह से ऑटोमेटिकली जितने भी बच्चे उस कमरे में होते थे वो सब कुछ सीख गए। अब मैं भी इसमें कोशिश कर रही हूँ अपने बच्चों को इसी तरह से ही, रात को सोने से पहले ही 6 के 6 कलमे। 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। मैंने भी अम्मी के उस जाते हुए मैंने इसी तरह से किया और बहुत इजी लर्निंग हो जाती है। ये एक अलग से हम उनके स्कूल के टाइमिंग्स में उनको करें कि आए ये करें, उससे बेहतर है कि रात में हम फ्रेंडली इस तरह सोने से पहले कर दें। वो बहुत अच्छा याद करते हैं बच्चे, क्योंकि उस टाइम रिलैक्स होते हैं और आराम से सारी की सारी अटेंशन पे कर रहे होते हैं। और दूसरी बात मैंने ये कहनी बहुत थी, अच्छी बात आपने की। जी जी, आप बताइए। आपका बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छा लगा। और जो जो आप पॉइंट्स बता रहे थे तो मैं पीछे जा रही थी अपने ज़माने में, जब हमें हमारी मदर सिखाती थी, हमारे फादर। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ब्लेस यू।